हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने हमारा सेशन 4 लेकर आए हैं। आज के सेशन का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज। आज हमारे साथ मेहरुनिसा मौजूद हैं, मेहरुनिसा खान जादून मौजूद हैं। थैंक यू मेहरुनिसा फॉर जॉइनिंग अस। लेट मी इंट्रोड्यूस यू एंड देन आई विल हैंड ओवर टू यू. Mhm. Mehrunisa is holding a degree in science biochemistry. She is certified from Canada, Pakistan Sign Language as an instructor. She's working as a sign language instructor and interpreter from last 5 years, and now she's working as an English language facilitator as well. Uh, she has conducted sessions on sign language, and she's working on the awareness of deaf culture and the importance of sign language. The purpose of taking this topic is कि हम ये बता सकें या ये अवेयरनेस लोगों तक ला सके कि अगर हमारे पास क्या साइन लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है और किस तरह से हम इसको उन लोगों के साथ जो कि डेफ हैं उनके साथ किस तरह से हम इसको आगे लेके चल सकते हैं. सो मेरूनिसा, हैंड ओवर टू यू. Oh, thank you so much. Thank you for inviting me and giving me this opportunity to discuss about this topic. So, I'm going to explain a little about what is sign language, little description about sign language, and then the importance of sign language, which we should know and work on it in our lives. So, the first thing is that sign language is basically non-verbal language which is made with signs using your hands and other movements, other body movements, including your facial expressions and body postures, your body gestures. When you're talking, like for instance, if I'm talking verbally, I'm adding vocabulary to my language and I'm explaining that to you in a spoken language. When you're signing, you're just moving your hands, your body gestures, your facial expressions. This is what actually counts. And through that, you convey your message or you convey whatever you would like to say. Sign language is basically the native language of the deaf, or a language which is used by the deaf community and the people connected to them. For instance, there are three terms that we use for the people who are connected to the deaf community, which is SODA, CODA, and NERDA. SODA is a sibling of deaf adult or any relative of deaf adult. CODA is child of deaf adult or maybe any someone like this. And NERDA is not even related to deaf adult, which means that a person which is not connected to the deaf community, like he or she doesn't have any relative, any sibling in his family or any friend who's deaf, but still he or she knows the sign language because he works with that community or works for that community. So that person is called NERDA. I'm a NERDA basically. I don't have any sibling or relative in my family which is deaf and or which uses sign language, but I learned this language and started working with the community or for the community so that I can play a role in the society to bring the change and to be a part of community that needs us, that is basically the language, their language. I wanted to adopt their language and work for them. uh, now please change the slide, Mona. Okay. So sign languages are not universal. Sign languages are like, we have Urdu as a national language in Pakistan. So people here who know English and Pashto, Sindhi, etc., they all understand Urdu basically because that's a national language. For the deaf, they only understand sign language. They can write, they can read English, Urdu, but they cannot sign it, like they cannot speak it. So they have to use the sign language. Like if they're explaining anything in Urdu, they will have to use the sign language to explain that language. So
साइन लैंग्वेजेस आर नॉट यूनिवर्सल, यानी कि जैसे अगर पाकिस्तान में वी हैव पाकिस्तान साइन लैंग्वेज जो कि उर्दू के बेस पे बनी है, और इन अमेरिका वी हैव, इन द यूएस वी हैव अमेरिकन साइन लैंग्वेज जो इंग्लिश के बेस पे बनी है। इसी तरह ब्रिटिश साइन लैंग्वेज है, वो उनके लैंग्वेज के बेसिस पे बनी है। बट इन पाकिस्तान हम तीनों लैंग्वेजेस के बेसिक्स को यूज करते हैं, जैसे अल्फाबेट्स इन ASL, अल्फाबेट्स इन BSL, एंड देन हरूफ ताजी इन PSL। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, दैट दैट आर यूज्ड इन फिंगर स्पेलिंग। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, व्हाट इज साइन लैंग्वेज, दिस इज बेसिकली द फर्स्ट picture. The first line is sign in sign language. This is finger spelling, SIGN, and below this is language, 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 sign language. This is basically finger spelling, which you spell a word, a vocabulary through your fingers, through your hand only. So I encourage people to learn sign language, even if you don't want to learn further, at least learn the basic alphabets or basic finger spelling, so that if you come across someone who knows sign language and who needs to talk to you in sign language, you can help them in answering, or you can help them in connecting. You can help them connecting them to other people or so. Uh, there are between. Please change the slide, Mona. Ji, thank you. Okay, this is something about the language. Every language has their own grammar and lexicon, and every language is made through their cultural and different things that includes in a language. So, in sign language, it's a full-fledged natural language with own grammar and lexicon. It's a movement of hands and arms and body gestures and facial expressions. This, which I've already explained. Let's go to the second slide. Okay, so sign languages are not universal. Every country has their own sign language. There are about 138 to 300 different kinds of sign languages used throughout the world today. But that doesn't mean that if you know about only PSL, like Pakistan Sign Language, you cannot communicate in ASL. We are still using the basics of ASL. The alphabets are from ASL, one-handed alphabets. We're still using BSL, British Sign Language, the basics of BSL. So even people from the US, if they know ASL and they come across people in Pakistan with the deaf community in Pakistan, they're easily communicating in their language, because साइन लैंग्वेज तो बेसिक लैंग्वेज तो आती है ना उनको। तो वो अल्फ़ाबेट्स और वो थोड़ा-सा जो होता है ना, वो आपस में मैनेज करके दे अंडरस्टैंड दैट। हो सकता है कि हमें समझ में नहीं आए जो हियरिंग पीपल हैं, क्योंकि हमने तो एक वोकैब्युलरी सीखी है और हम तो उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। मगर जो डेफ कम्युनिटी है उनके लिए ये उनकी नेटिव लैंग्वेज है। तो चाहे वो यूएस से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, मगर उनको अगर अपनी लैंग्वेज आती है, साइन लैंग्वेज, तो दे कैन ईज़िली कम्युनिकेट। दिस इज़ द 4th मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, मगर इतना ये इम्पोर्टेंस रखती है। और इसलिए मैं इसलिए ये इसको एनकरेज करती हूँ कि देखें, प्लीज़ चेंज द स्लाइड मोना, कि देखें हम लोग ये सोचते हैं कि यार, लोग कहते हैं चलो इंग्लिश सीख लो, फ्रेंच सीख लो, वर्बल लैंग्वेजेस सीख लो। Why is a non-verbal language not important for us to learn? We should be learning that as well. Okay, sign language is a brilliant tool that will help bridge the communication gap which might exist when there is a hearing impairment, or even sometimes where there is no hearing impairment. Sometimes early years development में बच्चों के जो जिनकी लर्निंग थोड़ी डिले होती है, लैंग्वेज लर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है।
तो उसकी प्रैक्टिस के लिए समटाइम्स वी यूज़ बेसिक साइन लैंग्वेज, मगर वो उसको फिर लेटर ऑन जब वो लैंग्वेज पे आते हैं, अपनी वर्बल लैंग्वेज पे, तो वो यूज़ नहीं करते। मगर ड्यूरिंग अर्ली इयर्स समटाइम्स ऐसा होता है कि हम यूज़ करते हैं, समटाइम्स ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ये यूज़ करनी पड़ती है, बिकॉज़ दे आरंट एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स, तो इसलिए हम ये नॉन वर्बल लैंग्वेज उनके लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। So now we will explain about the importance of sign languages. It is as important as other verbal spoken languages. Why? Let's see in the next slide. Why do you think English is important, Urdu is important, French is important, or Chinese is important? Because, language is something we use to communicate with another human being in every way to understand each other. We need to understand what we are speaking. For that, we will have to learn the language. It is an important function that develop our relationship with others. Deaf people uses sign language as hearing people uses vocal verbal spoken languages. So this is basically a language. ये कोई academic से related नहीं है, ये deaf education से related नहीं है. This is just a language to um, minimize the communication gap that we, the hearing community, are having with the deaf community. So I encourage people to learn because बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ, थ्रू आउट द वर्ल्ड भी बहुत कम लोग हैं, मगर यहाँ भी बहुत ज़्यादा कम लोग हैं जो इधर उनकी फैमिली में अगर कोई है या उनके रिलेटिव्स में कोई है या उनके फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके साथ उन्होंने पढ़ा है, तो वो उनके लिए वो लैंग्वेज सीख लेते हैं, यानी कि वो उनके लिए साइन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो उनको आती है। मगर उसके अलावा जितनी भी हमारे हियरिंग कम्युनिटी है वो दे डोंट कम टुवर्ड्स दिस, दे डोंट find it important to learn the language. तो please move to the next slide. Okay. So with sign language, everyone is included. Why is this? Because अगर कोई भी फॉर इंस्टेंस अगर कोई इवेंट है या इवन अगर कोई न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ आ रही है, तो हेयरिंग पीपल को वो सुनाई भी दे रहा है, वो देख भी रहे हैं, वो रीड भी कर रहे हैं, सब कुछ। मगर जो अगर कोई डेफ इंडिविजुअल देख रहा है, तो उनको नहीं समझ में आ रहा। तो ये एक लेफ्ट आउट वाला सीन हो जाता है कि यार वो कम्युनिटी लेफ्ट आउट हो गई है बिल्कुल। तो वी डोंट वांट देम टू फील दैट। इसलिए रिसेंटली मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को सेशंस दिए थे ऑनलाइन, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी बिकॉज़ यू नो यंग बच्चे अगर इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं और वो एक नई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ एन अचीवमेंट कि अगर आपने उनको ये एनकरेज किया ये करने के लिए। तो मैं मतलब being an educationist for you, Mona, I encourage you to please encourage people on your platform to learn this language just as a language. आप इसको academically ना लें, आप इसको, and there are a lot of resources available online. You don't need to invest actually. You don't need to अगर आपको है कि ये लैंग्वेज सीखनी है तो आपको कोई ऑनलाइन कोर्स करना होगा या आपको जाके कोर्स करना होगा या आपको पेमेंट्स करनी होंगी। इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू दैट, इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। आपके पास पीएसएल के भी रिसोर्सेज हैं, यानी कि पाकिस्तान साइन लैंग्वेज के रिसोर्सेज हैं, अमेरिकन साइन लैंग्वेज के रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वेबसाइट्स पे मिलेंगे डिफरेंट। पीएसएल की बुक्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप ईज़िली सीख सकते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए लोग टेफल करते हैं। मैंने भी किया हुआ है टेफल, टेफल, टेसल और आइल्स करते हैं टू फॉर स्कोर एंड ऑल। तो ये भी एक लैंग्वेज है, ये सीखनी चाहिए। 7 reasons sign language is awesome. Why is this awesome? Let's see. Because this is the native language of the deaf, so it is important for the deaf people. It is more expressive. जब हम स्पोकन लैंग्वेज यूज करते हैं तो समटाइम्स वी जस्ट रीडिंग, वी जस्ट सेइंग इट, क्योंकि हमें तो आदत है, तो हम इतने फेशियल एक्सप्रेशंस या इतने एक्सप्रेशंस यूज नहीं करते। बट बट इफ यू यूजिंग अ साइन फॉर समथिंग और सो, तो आपको वो एक्सप्रेसिव करनी होती है, बिकॉज वो फेशियल एक्सप्रेशन के अलावा
आपकी बॉडी लैंग्वेज से और फेशियल एक्सप्रेशन से ही आप उस एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी बात को। तो इट इज़ मोर एक्सप्रेसिव एज़ कम्पेयर टू द स्पोकन लैंग्वेजेज़। इट इज़ लाइक यू आर लिसनिंग विद योर आईज़, क्योंकि आप जब तक देखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। हेल्पफुल फॉर पीपल विद ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिन बच्चों का जैसे मैंने आपको बताया, जिन बच्चों को जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं या जिनको अर्ली इयर्स में ज़रूरत होती है, उनके लिए भी साइन लैंग्वेज यूज़ होती है। Having a private conversation in a public place, this is something के ज़ाहिर है यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनको आती है। तो अगर आपको आती है और आप यूज़ करते हैं तो this is going to be a plus point for you. Children can acquire sign language in the very same way as they acquire spoken language. अ, देखिए बच्चे जो होते हैं ना वो ईज़िली अडॉप्ट करते हैं। आप उनको जितनी भी लैंग्वेजेस सिखाएँगे they are going to learn it as पॉसिबल, प्लस वो अडल्ट से ज़्यादा जल्दी ये उनको समझ में आता है, वो लर्न करते हैं। तो अगर हम शुरू से ही प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को साइन लैंग्वेज भी एज़ अ लैंग्वेज अगर उनको सिखाएँगे, तो वो ज़रूर लर्न करेंगे। और ये तो हियरिंग कम्युनिटी में फिर बच्चे भी आ जाते हैं, तो अगर आप इनिशियली शुरुआत ही इस चीज़ से करते हैं, और लैंग्वेजेज़ के साथ, तो बिल्कुल बच्चे सीखेंगे। एडवांटेजेस ओवर स्पोकन लैंग्वेजेस, इसके एडवांटेजेस हैं इसी तरह जो हमने अभी एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ सिनेरियो कि मे बी हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस इफ यू कम अक्रॉस अ हेयरिंग इंडिविजुअल एंड अ डेफ इंडिविजुअल, मिसाल के तौर पे अगर आप एक हॉस्पिटल में हैं और कोई डेफ पेशेंट है और हेयरिंग डॉक्टर है, और अगर आपको साइन लैंग्वेज आती है, आपने ऐसी सीखी हुई है एज़ अ लैंग्वेज, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे उनका कम्युनिकेशन गैप जो उनके बीच में है, आप उसको फ़िल कर सकें। आप डेफ पेशेंट की बात हेयरिंग डॉक्टर को एक्सप्लेन कर सकें, और हेयरिंग डॉक्टर की जो बात है, वो आप डेफ पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकें। सो एक्चुअली you're playing a role in the society कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं इस तरह से, उनका कम्युनिकेशन बैरियर ख़त्म कर रहे हैं। तो साइनिंग इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स पीपल एक्चुअली। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से कनेक्ट हो रही है। जो हेयरिंग कम्युनिटी है वो डेफ कम्युनिटी से कनेक्ट हो रही है। डेफ कम्युनिटी में बहुत सारे लोग उर्दू पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। उनको आप थ्रू विजुअल्स आप उनको बात एक्सप्लेन कर सकते हैं। मगर आपको उनकी बात कैसे समझ में आएगी? हेयरिंग हम लैक कर रहे हैं इस चीज़ में कि हमें उनकी बात समझ में नहीं आती। So basically, we are lacking this and we have to learn their language to understand what they are talking about actually. So this is all I had to say, and I hope I have played my role. Yeah, thank you so much, Mehrunisa, for the wonderful session. Even You're मुझे भी welcome. बहुत सारी advantages नजर आए sign language के. As an educator, we should, learn this Yes, language. exactly. So We should I will, motivate this on yeah, yeah, actually. yeah. I So will definitely do I'll this. request That I will you to do encourage. that because Yeah. So because see, when we work in early years ना, तो हम बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो हम most of the time बच्चों को सबसे पहले जो दिखा रहे होते हैं या सिखा रहे होते हैं, this all about facial expression या तो body gesture. जब एक छोटा बच्चा जी, जैसे इन्फेंट है या छोटा सा जो बॉर्न बेबी है, वो हमें कैसे कम्युनिकेट करता है? वो थ्रू जेस्चर ही कम्युनिकेट कर रहा है हमें, वो थ्रू एक्सप्रेशन ही हाँ, हमें कम्युनिकेट कर रहा है। अदरवाइज जैसे ही बच्चा बड़ा होता जी, जाता है, सो दे स्टार्ट पॉइंटिंग आउट द थिंग्स। So this is very important to understand the gestures, and this is one of the language. आप बिल्कुल सही बता रहे थे कि ये हमें एज एन अवेयरनेस, हमने क्यों ये टॉपिक लिया है, तो मैं ये बताना चाहूंगी सबको कि हमने ये टॉपिक लिया इसीलिए कि हम ये समझ सकें कि हर चीज को हम बहुत ज्यादा सेपरेट कर देते हैं या बहुत ज्यादा अपने आप पे हावी कर लेते हैं। सो जब हम ये बात करते हैं एग्ज़ैक्टली, साइन लैंग्वेज की, तो हमारा पूरा पूरा कंसंट्रेशन ऐसा चला जाता है कि हम क्यों सीखें, क्योंकि हम डेफ नहीं है या हमारा हेयरिंग कल्चर से एग्ज़ैक्टली। ताल्लुक नहीं है। सो व्हाई वी लर्न दिस? हुँ, So this is not all about this. So sign language is a language like we learn English, like we learn Urdu, like we learn French, Chinese. जबकि चाइनीज में भी हम चाइना में नहीं रहते, लेकिन हम सीखते हैं क्योंकि हमारी अपनी ग्रोमिंग है, हाँ, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे आइल्स की आपने बहुत जी, अच्छी बिल एग्जांपल दी। सो वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग, बट हम साइन लैंग्वेज पे जब जाते हैं तो हमारा एक कंसेप्शन बना हुआ है, एक परसेप्शन है
कि हमने उसको ऐसे ही कंसीव किया हुआ है कि ना ऑल साइन लैंग्वेज अगर हम सीखेंगे तो दैट मीन्स वी हैव टू वर्क विद द हेयरिंग एंड कल्चर लाइक दिस. So thank you so much, Mehrunisa, Exactly. for this all information about this, and inshallah I hope कि हम next time जो है ना इससे थोड़ा सा और डिटेल में हेयरिंग कल्चर के बारे में बात करें अपने सेशंस में. Thank you so much for joining जी, जी, us. बिल्कुल, इंशाल्लाह, Thank you so इंशाल्लाह. much for joining Thank you us so and much. giving You're us welcome. time. Thank you for inviting me. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.